So next function is describe interest point. You passed IPTS upright extended image and verbose. The verbose is empty. Fields I points return end. So if you don't find any points, important points in the image, it will just return end. If verbose had somebody sent some values, so angles you return, and draw now will name align descriptor x comma y. Now here it starts 1 to length of IPTS. Now display only the last first 40 points. Now if you want more than 40 points, जो कि आपके लीनियर इसमें सिर्फ ऊपर के पॉइंट दिखते हैं और आपको ज़्यादा पॉइंट चाहिए, तो here you have to change it. So if I is greater than 40 else false, मतलब वो बंद कर दे. अदरवाइज IPTS इक्वल टू IPTS ऑफ I, तो वो करंट IP लोड करता है. If extended IP description length 128 else IP description length 64, तो वो आपके इमेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, 128 से आगे वाला और 64 से पहले वाला. देन गेट द ओरिएंटेशन इफ वर्बोस h कॉमा एंगल सब प्लॉट ऑटो 5,8 में वो प्लॉट कर देता है. ओरिएंटेशन सर्व डिस्क्रिप्टर IP कॉमा इमेज कॉमा वर्बल. Then extend the served descriptors if verbose figure h gets subplot 10,4, I, तो वो अपने आप बढ़ते जाएगा और टक 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 1 2 3 4 प्लॉट करते जाएगा. नाउ दिस इज फॉर 40 पॉइंट्स. सो once you plot those 40 points, then get descriptor IP upright extended image verbose. IPTS का ओरिएंटेशन चेक करेगा by putting the orientation and descriptor value. और अगर इस लूप में से बाहर आ जाएगा और अगर आपका एच एंगल मिसिंग होगा तो इट विल जस्ट पुट अ कलर मैट चेप. And this is how this entire code is running. Now I will add one more function explanation in the same video. So now paint surf. So function paint surf, again you can delete these comments because most of these functions are taken from the internet. So function surf I comma PTS convert images to double. I point basically you divide the images by 255, make it to a class u int 16. अगर में है वो तो उनको डबल कर दो और 65535 से डिवाइड करो. int 8 में है तो उनको प्लस 128 करके 255 ऐड कर दो. int 16 में है तो इस तरह से ये नॉर्मलाइज करके, अदरवाइज जो डायरेक्ट इमेज है उसको डबल कर दो. सो वंस यू हैव दिस इमेज, आई एम शो इमेज इज फील्ड एम्प्टी, IPTS रिटर्न 0. इफ द पॉइंट एग्जिस्ट देन IPTS ऑफ I 2 इंटू फिक्स 2.5 IP स्केल से मल्टीप्लाई करो S और S/2 से R तो मल्टीप्लाई करो. देन पॉइंट इक्वल टू IP डॉट एक्स IP डॉट वाई. देन IP डॉट एक्स कॉस ओरिएंटेशन से मल्टीप्लाई करो और साइन ओरिएंटेशन से मल्टीप्लाई करो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को. If IP Laplacian is greater than 0, then mypen 0 0 0, mypen 1 0 0, else rectangular curvature draw करो and then you cut. Finally you plot PT सारे points plot करते जाओ and then once you plot them you put a G, that is for green line, and that's how the code ends. I will like to add one more function in the same video. So now the function lengths are also reducing because we are about to finish. So here again you have to see whether the integral image of I, so integral underscore integral image of I is convert the image. Again you convert all the classes like I explained before. And if your color is not YCBCR, if it is RGB, then you just convert it by these multiplying factors. This you can learn from a TV theory, and then your integral image can be compared. Otherwise एक YCBCR में रहेगा और दूसरा RGB में रहेगा, so then you cannot compare. So then finally you have cumulative summation of both the images, and then you make the integral of the image. I would like to add one more code to the same video. Since the codes are becoming smaller, I will keep on adding them. So here integral image box integral you put, so row column you take and row column image you pass, then integer of coordinates, fix rows fix columns, rows and columns fix करने के बाद get the corner coordinates. So size of the image read करके उसके मिनिमा निकाल लेते हैं, that is the corner coordinates R1 C1 R2 C2. get the values of the corners and सबके max निकाल लो sx minus 1 से मल्टीप्लाई करके. तो सारे रो कॉलम एक सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करके ए बी सी डी निकाल लो और उसमें से ए R1 ग्रेटर देन 1 हो, सी R1 ग्रेटर देन 1 हो. फाइनली ये चारों को मैक्स ऑफ ए बी सी मतलब सब्ट्रैक्ट करके प्लस डी करो, दैट इज R2 एंड C2 लेस देन 1, एंड देन you fit the image into the integral box. So this is the extraction of the boundaries of the image
एंड 0,0 से R, C तक जो भी जाएगा उस इमेज को फिट कर दो उस बाउंड्री में।